क्यूट पेंसिल ड्राइंग, ब्यूटीफुल पेंसिल ड्राइंग, बेबी फेस पोर्ट्रेट ड्राइंग। अगर ये सब चीजें आप लोग सीखना चाहते हैं तो ये चैनल आप ही के लिए है। अगर ये वीडियो आपको सीखना है तो लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हम बेबी का ड्राइंग बनाने से पहले कुछ जरूरी टिप्स है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम मोबाइल से अच्छा सा पोर्ट्रेट पिक्चर खींचेंगे और उस पिक्चर को ड्राइंग ग्रिड नाम की ऐप के अंदर ओपन करेंगे, जिसके अंदर आपको पिक्चर की ऊपर ग्रिड मिल जाएगी और उस ग्रिड को तैयार करने के बाद हम हूबहू उसकी आउटलाइन स्केच करेंगे। स्केच करने के बाद हम यहाँ पे अलग अलग पेंसिलों की मदद से अच्छी तरह से ये वाली शेडिंग करेंगे। सबसे पहले ड्राइंग की शुरुआत करेंगे आई बॉल से, आंखों से, आईब्रो से। यहाँ पे फेस के अंदर आंखें बड़ी है तो मैंने चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल किया है और आंखें जितना काली हो सके उतना काली बनाने का प्रयास किया है। साथ में आंखों के अंदर जो लाइट दिख रही है उसको व्हाइट जेल की पेन से किया गया है। साथ में स्किन तैयार करने के लिए मैंने HB पेंसिल का इस्तेमाल किया है। सबसे जरूरी बात होती है ब्लेंडिंग। यहाँ पे मैंने ब्लेंडिंग करने के लिए सिर्फ ब्रश का इस्तेमाल किया था और कुछ जगहों पे रुमाल का इस्तेमाल किया है। जितना अच्छा बेबी का फेस ब्लेंडिंग होता है उतना ही सुंदर क्यूट आपका पोर्ट्रेट तैयार होगा। यहाँ पे मैंने ब्रश का इस्तेमाल करके अच्छी तरह से टाइम देकर लेयर टू लेयर कर अच्छी तरह से पूरा स्केच मैंने तैयार किया है। स्किन तैयार करने के बाद जहां पे डार्क है वहां पे 2B और 6B पेंसिल का इस्तेमाल करके स्किन को और ज्यादा ब्लेंडिंग किया है। धीरे धीरे मैं बालों पे आ रहा हूं। यहाँ पे बालों के स्ट्रोक सीधा चेहरे के ऊपर भी आ रहे हैं और बालों के नीचे भी हल्का फुल्का शेडिंग दिखाई दे रहा है। तो सबसे ज्यादा मेहनत यहाँ पे अगर आपको करनी है वो बालों में करनी है, क्योंकि यहाँ पे हर एक स्ट्रोक फोटो के अनुसार ही लगेगा। बाल जितने अच्छे बनेंगे उतना ही चेहरा ज्यादा खिलेगा। तो यहाँ पे बालों को और ज्यादा डिटेल करने के लिए मैंने फोटो को पूरा ऑब्जर्वेशन किया और जिस तरह से फोटो के अंदर बेबी के बाल जा रहे थे बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे मैंने बाल चारकोल पेंसिल से किए हैं। उसके बाद मैंने बालों के अंदर हल्की फुल्की ब्लेंडिंग की है। ब्लेंडिंग करने के बाद वापस मैंने व्हाइट कलर के स्ट्रोक लगाए हाईलाइट दिखाने के लिए और वापस डार्क स्ट्रोक निकाले हैं और डार्क बाल दिखाने के लिए। ऐसे बारी बारी हमें लेयर टू लेयर काम करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप, तब जाके इतना परफेक्ट आपको रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ चेहरे के अंदर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है मुंह। तो मुंह यहाँ बेबी का खुला है तो बेबी के मुंह के अंदर जो बबल्स दिख रहे हैं वो बबल्स दिखाने के लिए भी मैंने व्हाइट जेल पेन का ही इस्तेमाल किया है। और सबसे ज्यादा हाईलाइट दिखाने के लिए मैंने इरेजर का इस्तेमाल किया है। जितना आप डिटेल देंगे उतना क्यूट फेस तैयार होता जाएगा और लास्ट में रिजल्ट आपको बिल्कुल अच्छा मिलेगा। धीरे धीरे हम आते हैं कपड़ों पे। तो यहाँ पे कपड़ा जो है मैंने चारकोल पेंसिल से ही तैयार किया है और कपड़े के अंदर क्रीज दिखाने के लिए इरेजर का भी इस्तेमाल किया है और कुछ जगह पे और डार्क सिंबल बनाने के लिए मैंने चारकोल पेंसिल का ही इस्तेमाल किया। ये आपको स्टेप बाय स्टेप 2-3 बार करना पड़ेगा और इसके अंदर जितना हम ब्लेंडिंग करेंगे उतना ही अच्छा कपड़ा तैयार होगा।
यानी पूरे पिक्चर के अंदर अगर देखा जाए तो ब्लेंडिंग का ही कमाल है। जितना अच्छा हम ब्लेंडिंग करेंगे उतना अच्छा पोर्ट्रेट हमारा तैयार होगा। तो अब काम शुरू करते हैं। अब cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things. Gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. 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 Hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent, and it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Bad energy is like a poison, needs some antiseptic. Ain't no motherfucker in this world can do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to like bitch, you know where to find me. And if you're going aces, you can fucking fight me. Ain't no motherfucker in this world can do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. Me. Ain't no motherfucker in this world can do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough
lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it's time. In a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And where I'll go in life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back. Back a year ago. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा, इस चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा। नीचे रेड कलर का जो बटन है
उसे दबा दीजिए, साथ में घंटी का आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे आने वाले ऐसे बहुत सारे स्केचेस, पोर्ट्रेट आपको आसानी से मिलते रहे और मैं आप लोगों को कुछ नया नया सिखा सकूं। जाते जाते और एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों को व्लॉग देखना पसंद है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने अपनी दूसरी चैनल का भी लिंक दिया है, तो उस चैनल के ऊपर आपको सिर्फ व्लॉग देखने को मिलेगा, तो आप जाइए उस चैनल को भी सपोर्ट करें। चलो मिलते हैं कल एक नए आइडिया के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.